gentlemen, we gather here today to unveil the much anticipated trailer of Sam Bahadur, a film that pays tribute to a legend who became a symbol of bravery, leadership, and unwavering determination. Before I go on, can I please thank each and every one of you for just exemplifying patience and grace. I know you've been here for a while, and I'd like to apologize for the slight delay, but also as a commoner, as a civilian, I want to just acknowledge thank you for showing us how to maintain pin drop silence in an auditorium filled with lovely men and women. And right now, of course, I'm going to ask you to break that silence by giving yourselves a round of applause. Thank you. Of course, we're humbled beyond words to have amongst us General Manoj Pandey, Chief of the Army Staff. We thank him and the Indian Army for their continued support right through the filming of this wonderful movie. And there couldn't have been a better place to launch the trailer. This iconic stage, the Manekshaw Center itself, a state-of-the-art convention center of the Indian Army. The story of Sam Manekshaw is not just a tale of valor, but an inspiration for generations to come. Produced under Ronnie Screwvala's banner, RSVP, in the capable hands of visionary director Meghna Gulzar and a stellar cast comprising of Vicky Kaushal, Sanya Malhotra, yes, that would be appreciated, thank you, and Fatima Sana Sheikh. The film promises to bring to life the remarkable journey of a man and others who played a pivotal role in shaping the destiny of our nation as we know it. So without any further ado, presenting to you a story of courage, patriotism, and leadership that will undoubtedly leave an indelible marks in our hearts that led to India and many victories. We present Sam Bahadur, and to do this properly, definitely better than me, can I please call upon Ronnie Screwvala. Thank you. Hi Ronnie, you're looking sharp. Not sharper than the gentleman Not sharper out there. than him, Not of sharper course, than of course. So I and happen not to sharper than the gentleman out there. right there, yes. I must admit, I'm a friend of Jihan Manekshaw, all right. And I remember that there was this time when they were trying to get this film made. And legend has it that they came to you and asked you, who should make this film? What happened after and how did you come on? Could you tell us a little bit about that story? See, we Parsis are a small clan. Yes. So normally what happens is that in the Parsis, since we're about 66,000 and dwindling, one Parsi normally goes to the other Parsi, and I think that's how it happened. And then, of course, yes, we should give that answer a round of applause. Meghna, okay, I'm a huge fan, but how did, Meghna come on board for this project? Can you reveal too much right now? I can reveal more. I can reveal a long story, but I'll keep it a really short one. I think Meghna and I have been talking about doing something together. I saw her Talwar. I remember walking out of the auditorium and calling her and saying, we need to do that. And then before anything else, she did an even more splendid movie called Razi. And that's when the connection happened that I said, here's what we are thinking of. And she was excited. It was like a 1-minute conversation to just say, wow, this is something that I really want to do. And some of the things that really work are the ones that are spontaneous. And I think everything that we did from that moment onwards, at least from my point, was spontaneous. And from Meghna, it was always deep thinking, very thoughtful, a lot of homework, deep research. And here I was back to being spontaneous. Amazing. Thank you so much for setting the stage, of course. Without any further ado, Meghna, can I please request you to take the stage, Director Meghna Gulzar, please? Thank you. I would like for you to first, of course, thank the wonderful, wonderful people here. Thank you very much, all of you, for being here. बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को देखकर और जितनी नर्वसनेस हो रही है उसका मैं जिक्र नहीं करूँगी इस वक्त. बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे आपने जिस वजह से काम किया है या अपना काम किया है आपको अपना काम प्रस्तुत करने का ऐसा अवसर मिले जहाँ पे हमने सैम मानेकशॉ के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका ट्रेलर हम मानेकशॉ सेंटर में
दिखाने वाले हैं। एक फील्ड मार्शल जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उनको हम प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने। It is truly a blessing to have this privilege to be able to do this. And I'm very grateful, Ronnie, that you chose me to tell this story. Meghna, I have to ask you this question. Of course, for those who know the story, that's great. But why do you think it's an important story, especially because the medium of cinema can impact the young minds of the future? क्यों ज़रूरी है सैम मानेकशॉ की कहानी उन तक पहुंचाना? मुझे ऐसा लगता है कि जो आइडियल्स होते हैं या रोल मॉडल्स होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, उन पे जेनरेशन का असर नहीं होता। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी कंप्लीटली सच्चाई से, राइटियसनेस से और पूरी इंटेग्रिटी से जी है, दैट कैन नेवर गो आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ स्टाइल और बी फॉर एन ओल्डर जनरेशन और नॉट मॉडर्न इनफ। ऐसे इंसान की कहानी हर जनरेशन को पता होनी चाहिए। देयर इज़ जस्ट सो मच अबाउट हिम दैट इज़ सो इंस्पायरिंग एंड सो motivating. मतलब for us, it's for me, I say it's been a life-altering experience for me to make this movie, to get to know about his principles, about his ideals, and I think we all have subconsciously imbibed a lot of him along the way. So इसमें से अगर थोड़ा सा भी असर audience पर हो जाए कि यार, you know, one should try and be like him, because I always say they don't make men like him anymore. So if they start making a few more men like him after that, after this movie, nothing would be better. I think it's wow. That's so true. Absolutely. I think it's time right now for you to do the honors, and हमसे भी बेहतर कोई है जो इस ट्रेलर को हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। Over to you, Meghna. माननीय जनरल पांडे, हमारी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। आप ईस्टर्न कमांड में आर्मी कमांडर थे, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। तब से इस फिल्म की बातचीत आपके साथ चल रही है। आपका इसमें इंटरेस्ट, आपका सपोर्ट, ADGSI, ADGPI, आर्मी का सपोर्ट दिखता है इस फिल्म में और आपको इस ट्रेलर में भी दिखेगा। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं आज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और इस अवसर को शोभा दें। आप जैसे ही गो अहेड देंगे, हम इसे लॉन्च कर देंगे। बड़ी मुश्किल बात है। आप बस फरमान दे दीजिए सर। अच्छा, तो आप गो अहेड कर लीजिए। चलिए, बस डन देन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। May I just mention that this is literally the first audience in the world that's going to be watching this very special trailer. Thank you so much for being with us, and with your graces and permission, shall we show them the trailer, Meghna? Yes, sir has said we have to go ahead, and we must go ahead. Thank you, sir. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. You can take a seat. And could we have the trailer, please? Just to let you know, it will play twice, back to back. It's not a technical glitch. Thank you. सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छंडे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। Normal, Minister. The soldiers don't want normal, Minister. They want to win, and I want to win. जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचो तुम इस बारे में? टू द आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ। इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? The Indian Army. पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, ट्रक बजाने वाले से। स्टेट लेवल पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद
सब कुछ निकल जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, we will lose कश्मीर। सर, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manusha. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? Are you ready for this, sir? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न ठंडे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, अब इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन।